Assalamu alaikum everyone. Uh, Today we are going to make a new game in Unity 3D. This game will be based on an FPS character. I've already taught you in the class, and this is just for a quick revision and the things you have missed or forgotten during the class. Let's start by opening Unity Hub and create a new project in Unity 3D. It's going to be a 3D project. Let's name it as first person shooter, and create this project. You need to select a proper location for every project that you create. As usual, Unity will take some time to open a new project. Okay, so here is the new project in Unity 3D. As usually, we have a default main camera and directional light. We'll quickly bring a terrain in this 3D scene. I've already taught about a terrain, and our previous game was all based on a terrain surface, but I'll quickly just revise the contents of a terrain. You'll just open a game objects tab and go into the 3D objects and select terrain from here. The terrain will be added. Just rename it as the ground. Okay, now this is the ground, and just I always tell my students that you have to make sure that your camera should be according to the position of the game object that is lying in front of the camera, and that game object X, this is the red arrow, this is the X of the game object. It should be on the right side. This will give you a good perspective of all your game objects that are lying in a proper position, especially when we talk about the X, Y and Z axis of that game object. Now we can adjust the camera by right clicking it and selecting align with view. Now you can see that your camera view is same as your scene of the game. Okay, now quickly we will add some texture in as it's a terrain, so just select this brush, and this is a paint texture that you have to select. You can select as many options as you want, but currently we want to give some texture to the terrain. So select this paint texture, go to create layers, and you have to add some texture over here of grass or any kind of surface that you want to add on this terrain. And so now we don't have any grass texture over here, so what we are going to do, we are going to make a new folder. Let's name it as textures, and in this folder, it's in the assets folder. In this folder, just import any grass texture that you have. This is the grass texture, and just what do you have to do now? You have to add this grass texture in the terrain as a layer, right? You have to create a new layer and add this grass texture. Now you can see that this grass texture is applied on the terrain, but it looks very plain and very, it doesn't look like a grass actually. So what do you have to do? Just एक तो ये कि इसको zoom in कर लें, just to see what do you want to have, like ground अगर आप इस तरह दिखाना चाहते हो तो थोड़ा सा और हम इसको I'm just controlling all the things through the mouse, right? The left and the right click of the mouse, and I'm just
तो इस तरह से अगर हम ग्राउंड दिखाना चाह रहे हैं तो जो है वो आप उसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, राइट, लाइक दिस। ठीक है जी, ये सेट हो गया। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू align my camera with the view. Now this is your basically the game view. Okay, I already told you that you can add as many layers by create layer option, and you can give more textures by adding more layers on this terrain. Okay, you can add a mud texture or a another sandy texture, कोई भी texture जो आप add करना चाह रहे हो grass के साथ, because obviously it will look more natural when you will add some mud and some ground and all that. I can show you that as well. यहाँ पे हम एक और texture add कर लेते हैं mud का. I have that texture over here. Let's open Unity textures, and I have this mud texture and I can go to the terrain and add in the paint texture option. I can create another layer. This is the mud layer. Now you have to select this layer. The default layer is already applied, you don't have to select it, but the other any new layer in the terrain should be selected first, and then you can choose the brush size and you can choose the opacity. And let me just show you how you can just paint a little mud on this texture, and you can just zoom out, and all you can do is that select this brush size, and you can just apply a little, make it a little muddy, and in the game view you can see that the texture can be seen according to the brush and the opacity that you have selected. Okay, now again let me just zoom in and again go to I think I'm here. I always prefer that whenever I'm working in the scene view, my game view and scene view should be aligned, because that will make me understand the position of different game objects very quickly. So I try my best that the scene and the game view should always be the same. Okay, अब हम क्या करते हैं, we have already added the ground. In this specific game I want to create some night mode actually. तो उसके लिए मैंने ये किया था कि I have to download few assets that I have already added in the package manager from Unity Asset Store. Let me show you those two packages that you want to add over here, and then you can just see कि हम नाइट मोड को कैसे थोड़ा सा enhanced way में यहाँ पे create कर सकते हैं. Another thing that I want to tell you in this video that this video is going to be in parts. Like अगर आप मैं इसको पूरा full complete game नहीं बताऊंगी, it will be in different parts so that it's more easier to understand कि अगर वीडियो थोड़ी छोटी होगी, एक specific part हम इसमें cover कर लेंगे. So I'll try to make 2 to 3 parts of this game. ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ में. Okay, now let me just add this package manager. Open this package manager actually. You need to be connected with the internet when you are going to open the package manager, because otherwise it's going to give you package manager error. Sometimes it happens that your internet is connected and again it's giving you a package manager error. This is the reason when you do not open your Unity hub while you were connected with the internet. So just make sure कि जब आप Unity hub खोलें तब आपका इंटरनेट चल रहा हो, so that once your project is open आपका इंटरनेट उस वक्त ऑन हो. ठीक है, उसके बाद फिर आप बेशक बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन
जो है पैकेज मैनेजर को ओपन करने के लिए अगेन यू नीड टू जस्ट ओपन कनेक्ट विद द इंटरनेट. ठीक है, पहले इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए और पैकेज मैनेजर के टाइम पे भी रहना चाहिए इफ़ यू थिंक कि आपको बाद में पैकेज मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी. एनी हाउ, just open my assets and I'm just going to show you two packages that are here in my package manager. G class, here is the list of the packages that I have in my assets option. From here is my assets. In this manager, standard assets as well as street light pack that I have added from Unity Asset Store. Okay, so here is, just wait for a second, let this update all the packages. Okay, here we go. Let me search the standard asset pack. This is the standard asset pack. You have to download it and import it in your project. Unity is just taking some time to update this package manager. I guess they've just updated it. Okay, just wait. Okay, here we go. I just need to import it for my project. If you have not downloaded it, you can just download it from this button and then import it on the right corner of the screen. In this section you can see the link for the standard assets pack. This is basically if you're going to search free standard assets in Unity Asset Store, you're going to find the standard asset pack. I'll share the link of this pack with you on Google Classroom. I think I've already shared it. Okay, just import it. Now from here click this import button, and this standard asset pack will take some few minutes to import Unity. Okay, the standard asset is finally in my project assets folder. Here you can see the standard asset pack. This will be used for the first person character, and I always delete certain obsolete scripts that create some unnecessary errors because it's a 2018 version of standard assets. Let me just go to the standard assets utility folder, and in this utility folder I need to delete this simple active menu because it has some GUI text which is obsolete right now in Unity C# language. Just delete this simple activator menu or simple active menu and delete this script. And now you also have to import street light pack. हम वो भी import कर लेते हैं. ठीक है, let me just delete this script and import street light pack. Okay, here we go. I am again going to the package manager, and here I am going to search for a street light pack that I have added from Unity Asset Store. Just wait for a few seconds. Wait. G. This is the street light pack, and
today when I'm making this video, Unity is taking much time to update and show me these all packages. I don't know. Okay, now this is the streetlight pack. I've already shared the link with you all. Just import this pack. It's not going to take a longer time, just few seconds, and here we go. Okay, so this streetlight pack is there along with the standard assets pack. What I'm going to do right now is go into the streetlight pack, and I'll open this. I'll open the models, and I'll go into the streetlight pack 2. Here is the prefab of different street lights we have over here, and when I'll bring this streetlight game object, this will have so many streetlight poles as child objects. Okay, so this is object 1, for example, this is object 2, this is object 3. So it's a complete prefab, and I cannot directly delete few child objects just like that. Like if I'm going to delete it, it will not allow me to delete one single streetlight pack as a child, because it's a prefab. Prefab ये होता है कि it's a game object that cannot be changed unless you go into the specific prefab and do some changes in that. So what I'm going to do, I'm going to unpack this prefab, and because I just want one street light for this whole scene, और वही street light मैं हर जगह place करूँगी instead of placing ये different kinds of street lights. So I'm just going to right click this street pack parent object, and I'm going into the prefab option and unpack completely. इससे क्या होगा कि अब you can have the street pole of your own choice. For example, if I want this street pole, I'm just going to bring it in the main hierarchy, and I'm going to delete everything else. So now I have only one object as a street light. Let me just rename it as my street light, or any name that you want to give it. Alright, so this is the street light, and you can again align the camera align with the view so that you can see your street light pole. Okay, now what I'm going to do, if I'm going to delete the directional light just like that, so it's basically a very dark view now. I'm going to give this effect for the night mode, and I'm also going to import a skybox maybe later, but right now I'm going to give some light to this street pole. This street pole has globes in it, but it has no light. So what I'm going to do, I'm going to the light option, and I'm going to select any kind of light other than the directional light, maybe a point light, spotlight, or area light. Let me just choose this point light. What I'm going to do, I'm going to bring this closer to this globe, and I'm also going to change its range maybe to 12, or its intensity to 1.5 maybe, and I'm also going to add another point light because we have two globes. So I'm going to Control C and Control V, and I'm going to just drag it over here to another globe. अब क्या है हमारे पास, ये अगर हम दूर से देखें तो हमारे पास एक लाइट है which is, if I'm going to align it with view, तो आप देखिए कि सीन अगर हम प्ले करें तो हमारे पास दूर से एक नाइट मोड आ रहा है, जिसमें हमारे पास एक ग्लोब है, एक स्ट्रीट लाइट है जो कि दो ग्लोब्स के साथ उसमें पॉइंट लाइट्स चल रही हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड दीज पॉइंट लाइट्स इन द स्ट्रीट लाइट एज चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स. ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से देखें, जस्ट लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस ग्रासी ग्राउंड एज अ पर्सन, तो हम कुछ इस तरह से देख रहे होंगे इस लाइट को. ठीक है, तो हम अगेन अलाइन कर देते हैं कैमरा
ताकि हम अपना व्यू को जितना एडजस्ट कर सकते हैं कर लें। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास एक ये स्ट्रीट लाइट रेडी है। इस स्ट्रीट लाइट, it's a simple game object right now. It has it has some point lights that we have added directly, और मैंने point lights दोनों जो है उनकी रेंज और इंटेंसिटी चेंज की थी। यू कैन चेंज दीज वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइप ऑफ लाइट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, स्पॉटलाइट ऑब्वियसली आपको स्पॉटलाइट लुक देगी। एरिया लाइट जो है वो एक जनरल आपको लाइट इम्पैक्ट देगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ये करते हैं कि हम एक इस स्ट्रीट लाइट को जो हमने अब खुद बनाई है, इसमें लाइट्स ऐड करने के बाद हम इसको प्रीफैब बना लेते हैं। प्रीफैब बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स या कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो प्रीफैब बना हुआ है वो एक से ज़्यादा मर्तबा जब अपने गेम में ऐड करेंगे और बाद में अगर हमें कोई चेंजेस करनी होंगी उस प्रीफैब में, तो हम डायरेक्टली एक दफ़ा उस प्रीफैब में चेंज करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीफैब बनाने का तरीका ये होता है कि आप एसेट्स के फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसका नाम आप प्रीफैब दे देते हैं। बेसिकली आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट प्रीफैब इज़ ऑब्वियसली मोर रेलेवेंट। तो अब मैं ये अगर स्ट्रीट लाइट पोल उठा के इस प्रीफैब के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी तो अब ये स्ट्रीट लाइट पोल जो है ये एक प्रीफैब बन गया है, ठीक है। अगर अब मैं इस प्रीफैब को एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ प्लेस करूँ तो आप देखें कि सपोज़ ये थोड़ा सा हम इसको अच्छा, ये जो आपकी लाइट इम्पैक्ट होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होता है हर पोल के साथ, बिकॉज आपका कैमरा जिस पोल को फोकस कर रहा होता है पॉइंट लाइट आपको उसी की ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। या तो आप थोड़ा सा इसको दूर ले जाएंगे या तो जो फोकस में होगा पोल वो आपको उसकी लाइट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसके करीब जाऊँ, ये बहुत ही करीब हो गए एक्चुअली, तो इनमें से फिर हमारी इसकी लाइट ज़रा ज़्यादा आ रही होगी और इसको हम जो है वो इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होगी। मे बी यू विल एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। एनी हाउ, अच्छा जी, अगर मैं इनको अगेन डिलीट करूं तो ये जो मेन मेरा स्ट्रीट लाइट पोल था इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ये स्ट्रीट लाइट पोल जो है वो प्लेस करती हूँ, ठीक है। जो पेरेंट था वो मैंने प्लेस नहीं किया। इसको अगर मैं थोड़ा सा दूर रखूं, ये आउट ऑफ फोकस है, चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। लेट्स जस्ट डिसाइड कि हमने क्या करना है। एनी हाउ, जब हम अपना FPS कैरेक्टर डालेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है जी। ओके, अभी हम दो रख लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा जी, इसको हम चेक इस तरह से कर लेते हैं कि अगर अब ये हमारे मल्टीपल दो स्ट्रीट पोल्स हैं, लेकिन अगर मैं प्रीफैब के फोल्डर में जाऊं और ये अपना जो मेन प्रीफैब है इसमें जाके अगर चेंजेस करूं इसकी ट्रांसफॉर्म में, सपोज मैंने इसका स्केल में इसका Y जो है वो 2 कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया, अब क्या होगा कि ये जो स्ट्रीट लाइट पोल है मेरे पास, इसकी आप देखिए हाइट बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके प्रीफैब में जाके मैं इसका X बढ़ा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं यहाँ क्लिक करूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि इसकी X बढ़ गई है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है प्रीफैब का। प्रीफैब इंस्टेंशिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रन टाइम पे कोई भी गेम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो सकता है। प्रीफैब का ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब आपने बहुत ज़्यादा गेम ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए हों और आपने एक साथ उनमें चेंजेस करवानी हो, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी एक वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे वर्ड से, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक प्रीफैब में जो चेंज करेंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा जो उस वक्त उस गेम में लगा हुआ होगा, ठीक है। सो जो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगेन मैं इस प्रीफैब में जाके उसको नॉर्मल कर देती हूँ उसके स्केल को। हमेशा आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ता है मेन हायरार्की में प्रीफैब से, और फिर आप जब यहाँ आएंगे तो आपकी चेंजेस जो हैं वो खुद ब खुद अप्लाई हो चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है क्विकली
एक स्काई बॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। मेरे पास जो है वो TGU स्काई बॉक्स मौजूद है। इट्स अ गुड स्काई बॉक्स, इट्स नॉट वेरी हैवी एंड इट्स जस्ट हैव 4 डिफरेंट स्काई बॉक्सेस। 4 हैं आई थिंक, यस 4 हैं। तो ये इसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, जस्ट इम्पोर्ट देम एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। और उसके बाद हम जो है वो मैं आपको क्विकली दिखा दूंगी कि हमने FPS कैरेक्टर को लेके कैसे आना है। इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। हम ये इसको बंद करते हैं एंड TGU स्काई बॉक्स से लेट मी जस्ट चूज़ द स्काई बॉक्स ऑफ माई ओन चॉइस। आई थिंक ये डूम्सडे इज़ गुड। इसका ये है कि थोड़ा नाइट इम्पैक्ट है और बहुत डार्क कर देंगे, जैसे कि हमने सोलर सिस्टम वाला स्काई बॉक्स लगाया था जिसमें गैलेक्सी थी या स्टार्स, तो वो बहुत डार्क हो जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑलवेज हैव यू नो डिफरेंट स्काई बॉक्स। ये वाला भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इसका इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है और डूम्सडे का डिफरेंट है। इट्स अप टू यू वट एवर यू वांट टू ऐड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको यहाँ से इसका ये चीज़ें बंद करते हैं। हम दोबारा स्टैंडर्ड एसेट्स में जाते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स में देयर इज़ अ फोल्डर ऑफ कैरेक्टर्स। दिस इज़ द फोल्डर, द थर्ड वन। ठीक है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर एक फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर का फोल्डर है और उसके अंदर एक प्रीफैब का फोल्डर है। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स, फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, द प्रीफैब। प्रीफैब के अंदर आप फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जो है उसको आपने क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग करना है अपने सीन व्यू के अंदर, जस्ट लाइक दैट। नाउ यू कैन फील कि आप खुद इस सीन में यू आर रोमिंग अराउंड लाइक अ पर्सन। ओके, सो आप इसको कहीं भी प्लेस कर दें, वेर एवर यू वांट। आप यहाँ रख दें, चलें इसको, और यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दें। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि आपके सीन के अंदर एक फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर आ गया है। फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर एक और गेम ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ अ फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर विच हैज़ ऑलरेडी अ कैमरा एज अ कंपोनेंट एंड ऑडियो लिसनर। ठीक है, तो अब हमें इस गेम के अंदर मेन कैमरा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो इफ़ आई एम गोइंग टू डिलीट माई मेन कैमरा जस्ट लाइक दैट, तो ये देखिए कि आपका मेन कैमरा जो है वो चला गया, लेकिन आपका गेम व्यू अभी भी नज़र आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कैमरा इनसाइड द फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर। फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ अदर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर जो कि पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। अगर आप देखें, एक स्क्रिप्ट है फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर की, इसमें रिजिड बॉडी लगी हुई है, देयर इज़ एन ऑडियो सोर्स एंड ऑडियो सोर्स अगर आप देखें, मैं इसको अगर प्ले करूं यहाँ पर, तो आप एरो की फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी अप एंड डाउन एरो की से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं एंड माउस के स्क्रॉल से यू कैन व्यू इन अ 360 मोड। ठीक है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन इन ऑन एनी सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ही यही है कि जो प्लेयर है वो खुद को जो है वो इमेजिन करेगा कि आई एम इनसाइड द सीन। ठीक है, उसको हम फिर एक गन पकड़ा सकते हैं, हम उसको कोई भी वेपन पकड़ा सकते हैं, एनीथिंग दैट ही वांट्स यू नो इन दैट पर्टिकुलर गेम टू प्ले। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसने खेलना है, कोई बैट पकड़ा सकते हैं, कोई स्कीइंग स्टिक पकड़ा सकते हैं, एनीथिंग, बट इट the player will feel like that the player is inside the game. Okay, so just play this game और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. See, now you can view like a person standing on the ground and you can move forward. जब forward move करेंगे या backward move करेंगे arrow की से, up arrow की से forward चलते हैं. See, it's like दिस पर्सन इज मूविंग बैकवर्ड में भी ऐसे ही है, लेफ़्ट राइट भी जा सकता है और लेफ़्ट राइट के साथ साथ हम माउस को ड्रैग करके सो इट्स जस्ट लाइक पर्सन इज़ वॉकिंग ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है जी. जब इसको आप प्ले व्यू में होते हैं तो स्केप कर देंगे, स्केप एक दफ़ा करेंगे तो आपका कर्सर नज़र आ जाएगा. जिस
एस्केप दबाएं और अपना प्ले मोड बंद करें, तो आपको जो है वो वापस हम सीन व्यू में चले जाएंगे। ठीक है जी। जी, थोड़ा सा लैगिंग हो गई थी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो ओवर हेयर when the FPS इज़ देयर इन योर सीन। इसके बाद हम कुछ और एसेट्स इसमें ऐड करेंगे जिसमें हम मज़ीद आपको दिखाएंगे कि आगे हमने इधर क्या करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।